Good morning, students. I have started teaching you MS Access, where I have told you how many types of database are there. There are two types of database management system and relational database management system. So I was teaching you what are advantage of database. First one is you can see reduced data redundancy. What is the meaning of redundancy? Redundancy means repetition of data. If we have two tables and same data are repeated two times, then it will create problem. If we will search that data, then we can get output as two times. So we are reducing the data with the help of those keys which I have already explained, that is primary key and foreign key. Now you will answer me what is primary key and foreign key. Second, reduce update or error and increase consistency. When you will be using primary key and foreign key in relational database management, then if you want to update any data, then there will be no error. Means if you will be updating any data and it will be a new data. For example, हमारे क्लास में अगर कोई नया बच्चा आता है सेशन के बीच में, तो अगर उसका रोल नंबर हमें इंसर्ट करना होता है अटेंडेंस रजिस्टर में, तो हम क्या करते हैं कि अगर आप रजिस्टर में लिखोगे तो यू विल हैव टू राइट एट लास्ट ओनली, बिकॉज यू कैन डिस्ट्रॉय ऑल द रजिस्टर. बट इफ़ यू हैव टू अपडेट दैट रिकॉर्ड by using your computer, then whenever, that is the benefit of computer, whenever you are inserting any data, तो वो क्या करता है, sorting करता है. Sorting means होता है arranging data in ascending and descending order. Means it arranges the data in ascending and descending order, and whatever new record you will be inserted, it will update on the specified place. मतलब अगर A से नाम है तो वो ऊपर में insert हो जाएगा, Z से है तो लास्ट में. Improve data access to user means with the help of primary key and foreign key, user can access the data easily. In the last class I have told you what is database tools and how to create relationship. So by using relationship, हम relationship क्यों बनाते हैं, ताकि हम एक या दो से अधिक टेबल से डेटा निकाल सकें. नेक्स्ट वन इज़ improve data security. We have, जब भी हम प्राइमरी की एंड फॉरेन की यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा सिक्योर हो जाता है. मीन्स इट इज़ प्राइवेसी, मीन्स द डेटा विल बी इन प्राइवेट, मीन्स nobody can access which is not authorized. If you will allow, जो authorized user है those can access dot data. एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड. जो DBMS है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है. मीन्स इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग देयर ओन स्टैंडर्ड कि वी हैव टू स्टोर द डेटा लाइक दिस और लाइक दैट, और वी नीड दीज रूल्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो दैट रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेटिकली. nobody can change it. Okay, so these are the advantages of database. I hope you will understand. After watching this video, I will ask you question whenever I will take class in Zoom Meet.